Welcome dear students. Exercise 1.3, question 4, find two numbers whose sum is 68 and difference is 22. इस क्वेश्चन में ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 68 और माइनस करने से 22 आए. फर्स्ट, लेट टू नंबर्स x, y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बनती है. पहली, x प्लस y इक्वल्स 68, इक्वेशन A, और दूसरी x इक्वल्स 22 प्लस y, इक्वेशन B. y ऑपोजिट साइड पे माइनस होगा. Put x equals 22 plus y in A, then y plus y becomes 2y and 22 opposite side पे minus. 68 minus 22 equals 46. 2 divide कर देंगे. 46 divided by 2 is 23. y की वैल्यू 23 इक्वेशन B में प्लेस करके 22 plus 23 equals 45. Hence, the two numbers are 23 and 45. Now, question 5. The weather in Lahore was usually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees. By using the formula, find the temperature on Fahrenheit scale. Temperature in Celsius is 48 degrees. By using given formula, we can find in Fahrenheit. Firstly, temperature की value put करनी है, then 9 cross 48 by 5, 86.4 के equal आएगा. Hence, 86.4 plus 32 equals 118.4. Now, question 6. The sum of the ages of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? First, let the age of son, x and age of father, y. Statement के according, son और father की age का sum 72 years है. मतलब बाप और बेटे दोनों की एज प्लस करे तो 72 आएगा. 6 इयर्स पहले बाप की एज बेटे की एज का डबल थी. सो x माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 2x माइनस 12 बन जाएगा. 6 अदर साइड पे प्लस होगा. माइनस 12 प्लस 6 इक्वल्स माइनस 6. नाउ y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लेस होगी. x plus 2x equals 3x, 6 other side पे plus, so 72 plus 6 equals 78. 3 को 78 से डिवाइड करके, we got 26 years. सोन की एज currently 26 है, but 6 years ago की एज के लिए इसमें से 6 माइनस करेंगे. So, 6 years before, son's age was 20. Goodbye dear students, next video तक stay tuned.